Hello students, hope you all are fine. Today we are going to learn about analytical paragraph. What does the word analytical indicate? Analytical indicates an analysis of something. An analytical paragraph is based on the analysis of the data that is given in the form of some graph, table, chart, or some pie diagram or any other clues. Okay, an analytical paragraph is written bearing in mind the fact that is given in the form of a chart or a graph that should be covered comprehensively in the paragraph that we are going to write. See, data analysis has become an inseparable part of our lives. It has become an integral part of our lives. In every aspect of life, we see one or the other form of data analysis being done. We see in the newspaper also, or we see in the television also, a lot of graphs, lot of pie diagrams, table charts that are being used. So we should be able to analyze them, and we should be able to draw out some conclusions, some observations. So it is basically to enhance your observation skills, and we have to also make sure that the data that is being provided in the form of chart or graph and what you are going to write in the form of a paragraph, it should be covering all the important information that is given in the data. Okay, so that shows how much carefully you've been able to observe the things. तो क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इसमें आप ये देखेंगे डेटा एनालिसिस, जो कि मैंने बताया इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। इसको सीखना समझना जरूरी है। ये आपके केयरफुल ऑब्जर्वेशन को भी इंडिकेट करता है कि कितने केयरफुली आपने चीजों को ऑब्जर्व किया। तो इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें यू हैव टू यूज सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज मतलब बहुत इसमें टेक्निकल जार्गन्स आपको यूज नहीं करना है, जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उसको यूज करना है, और साथ में प्रिसाइज लैंग्वेज में आपको बात करनी है, एक्यूरेट लैंग्वेज में आपको बात करनी है। इसी तरह मतलब किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी, एक्यूरेटली अपनी बातों को रखनी है। ठीक है, इंक्लूड ऑल द डिटेल्स गिवन इन द चार्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इन द पैराग्राफ। जो भी डिटेल्स चार्ट में दिया होगा या ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पैराग्राफ में नोट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट आप ओमिट कर दें या डिलीट कर दें या हटा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गिवन देयर इन द चार्ट और इन द ग्राफ दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिवली written in the paragraph. And next is the figures and quantities must be mentioned correctly. जो figures और quantities जो दिए हुए रहेंगे आपके, वो करेक्टली आपको जब आप पैराग्राफ लिखते हैं वो करेक्टली मेंशन होना चाहिए। ओके, इसमें किसी तरह का मिसमैच या गलती नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन द डेटा गिवन इन द चार्ट और ग्राफ एंड दैट स्टेटेड इन द पैराग्राफ। मतलब जो ग्राफ में जो डेटा दिया हुआ है, जो डेटा फिगर्स दिया हुआ है, और जो पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी मिसमैच। डिस्पैरिटी मीन्स कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए कि व्हाट द डेटा इज रिफ्लेक्टिंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग इन द पैराग्राफ। there should be there should not be any mismatch, rather what you are writing in the paragraph should be according to the data that is given there in the graph or chart. And next we say it is advisable to use the same tense throughout the paragraph. same tense आपको इसमें यूज, जैसे पास्ट यूज करें तो पास्ट में रखें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको स्विच ओवर करते रहें, तो नॉर्मली आप सेम टेंस को ही इसमें फॉलो करें। एडेयर टू द वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट आपका एज पर दी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के तहत आपका जो वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स है, दैट यू हैव टू एडहेयर टू। ओके, एडिट योर पैराग्राफ बिफोर क्लोजिंग इट फॉर कंप्लीशन। अपने पैराग्राफ को पूरा लिखने के बाद जब आप कंप्लीट करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको जो है एक बार पूरा आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको अच्छी तरह से एडिट कर लें। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग जो है एक कॉम्पोजिशन है। इसमें लाइक एनी अदर पैराग्राफ राइटिंग और लाइक एनी अदर अगर हम बात करें किसी भी और फॉर्म ऑफ राइटिंग की, तो इट हैज आल्सो गॉट अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और इसके 3 सेक्शंस हैं। जो 3 सेक्शन है, जैसे अगर आप फॉर्मल लेटर भी लिखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक।
what we are going to talk about, what is the topic, so that the reader gets attracted to reading about it. Means he should not be confused about what you are going to write about. Okay, so in the very first few lines, 1 or 2 lines, you have to talk about what it is, and then the body of the analytical paragraph should be covering the core details. Okay, you should discuss the core details of the data that is given there in the form of graph or chart, and then in the conclusion part you should sum up, right? In the conclusion part you should sum up all the main details that are given there in a very brief manner, right? All the main points that are given there that have been discussed already in the detailing part also, you should conclude by saying those few lines to sum up. Means what is the essence of the whole analytical paragraph, that you should sum up there in the conclusion part. So we today in this video we are going to I'm going to show you the analytical paragraph, one sample analytical paragraph I'll show. So the things, the point that I've told you, I hope that you will keep in mind and do it accordingly. मैंने यहाँ पर एक पाई डायग्राम बनाया है. इस पाई डायग्राम में ये शो हो रहा है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्री में यूज हो रहा है उसके कौन कौन से सोर्सेस हैं. तो यहाँ पर कोल 61%, हाइड्रो मतलब वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो कितना परसेंट हम सोर्स जो है हमारा हाइड्रो से वाटर से रिसीव हो रहा है वो 15% है. रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से 13%, नेचुरल गैस से 9% और 2% न्यूक्लियर जो सोर्स है वो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल रही है. तो इसी पाई डायग्राम को मैं कैसे अब यूज करता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. So children, I have written the paragraph, analytical paragraph, that is solely based on the data provided in the form of the pie diagram. As you can see that I have started in the introduction line. In the very first line only I said that this given pie diagram shows sources of electricity by installed capacity in India. So what it is about, what this analytical paragraph is about, that is written in the very first line. That is the introduction part. Okay, this part is the introduction part, and then this part is the discussion part in which I have discussed the major takeaways that is based on the data that is provided in the form of the pie diagram. So it clearly indicates the heavy dependence of people on coal for the generation of electricity. The second largest source of electricity is the water, which is 15% of the total installed capacity. There has also been a rise in the use of renewable sources of energy with 13% of the total installed capacity. It shows how people are becoming more environment conscious. 9% of our electricity needs met by natural gas. The least dependence with only 2% is shown on nuclear energy. And in the last part, the last section, we talk about the conclusion. How do we conclude? The overall pattern of electricity consumption shows coal with 61% of total installed capacity is the source with biggest dependence. There is a need to switch over to more renewable sources of energy. तो इस तरीके से कोशिश मैंने ये की कि जो भी डेटा यहाँ दिया हुआ है, जो भी फैक्ट्स फिगर्स दिए हुए हैं, उसको यूज करते हुए इसमें आप कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे. किसी तरह का आप जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो सिंपल और एक्यूरेट होगा, और इसमें किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए. जो डेटा आपका प्रोवाइड किया हुआ है
और जो पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी बिटवीन द टू. ओके, आई मीन it should agree to what is being shown. The paragraph must agree to what is being shown in the pie diagram. तो ये पूरा शो होना चाहिए. और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, जितने भी इसमें डेटा फिगर दिए हुए हैं, उस सबको यूज करना है कॉम्प्रिहेंसिवली यूज करके. फिर उसका जो टेक अवेज क्या है, उसके क्या कंक्लूजन्स हैं, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस, आपने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उन ऑब्जर्वेशंस को आप सही तरह से वन लाइनर के फॉर्म में एक एक लाइन पे आप उसको लिखते जाएं. और फिर लिखने कंप्लीट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडिट करके देखिए, कहीं कोई ग्रामर एरर हो, कहीं कोई स्पेलिंग एरर हो. कई बार होता है कि लिखने के बाद आप उसमें कुछ गलतियां आप खुद ढूंढ सकते हैं, तो ठीक है. तो इस तरीके से जो है आप पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं, और जो आपके क्लोज ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है कि हाउ माइन्यूटली you have observed the things, and on the basis of which it basically it solely depends on the way you've been able to observe the things. If you fail to observe the things, or suppose you miss out on certain things, then in that case the analytical paragraph won't be a successful one, or won't be a perfect one, or won't be an accurate one. To make a better analytical paragraph, you need to have an accurate observation of the the pie diagram, or the data or the figures that is given in the form of pie diagram or graph or table, or other clues that will be provided to you in the question only. So you have to closely observe things and you have to write it down. Hope you understood the whole discussion over here. For any queries, please do drop down your questions in the comment box. And if you like the video, please do like it and share the video to your friends. And in the end, I would say thank you so much for watching the video. Have a nice time. Bye bye.